ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्लाइड्स नजर आ रही हैं? Yes, sir. चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। Yes. अच्छा जी, टुडे वी आर having last lecture on HTML. So it's the concluding lecture in which we are going to cover some additional features which are provided by HTML. As you can see in the outline, we will see how HTML graphics, how HTML supports the graphics, how it supports media, and there are various interesting APIs of HTML. So, and these are other than routine language matters, but these are interesting information. So that is, we are going to conclude our HTML portion of the course with this lecture. So once we come to HTML graphics, there are two ways in which graphics can be made. One is the functionality of HTML canvas, and other one is HTML SVGA. So we're going to just briefly see the concept of both two. The first one is HTML canvas. HTML canvas element is used to draw graphics on a fly with JavaScript. So make use of JavaScript, and we get the capability of drawing uh, various various figures, various icons, and for this, the HTML canvas element is only a container. So what we do, first of all, we create an object of canvas which works as a container, and then we write various codes for drawing the graphics. So for this purpose, you must use JavaScript to actually draw the graphics. And the graphic to the left is created with canvas. So you can see what the capability of canvas. You can write, you can create various colored boxes and various shapes. You can create shapes with color gradients, multicolor gradients, and then you can also write text with multicolor text. It may be filled or it may be hollowed. So this is basic functionality and features of using canvas. It shows four elements: red rectangle, gradient rectangle, multicolor rectangle, and multicolor text. Let's see the first example, how we create canvas. Canvas is a rectangular area on HTML page by default. A canvas has no border and no content. So just as you can see on the right, you can see a canvas, and how we are creating this canvas. Canvas has some ID. For example, here ID is my canvas. Then it has some width and height, and the style is indicating basically border of 1 pixel, solid style, and with color red. So there is a red color border with 1 pixel width for the canvas, and that's all. So this is a code. A canvas has a starting and ending tag as well. If any browser is not going to support the canvas, then only this text will be written. Your browser does not support HTML
canvas tag. So I hope it's clear. Any question on its basic canvas? हाँ सर। जी, तो बात हम ये कर रहे हैं कि कैनवस ग्राफिक्स बनाने से पहले हमें कैनवस ड्रॉ करना पड़ता है या कैनवस क्रिएट करना पड़ता है. सो दिस इज अ कोड फॉर क्रिएटिंग अ कैनवस. नाउ once canvas is created, you can add some JavaScript to draw line, circle, text, or stroke a text, draw a linear gradient, draw a circular gradient, or draw an image. So you will find various examples for doing all this. I'll cover just a few just to give you the idea. So this is functionality for draw line. So as you can see, there is a canvas, and this canvas is creating a canvas, and after canvas we are creating a script tag in which we are going to write JavaScript. And with JavaScript, the most commonly used method is get element by ID, and we have already given the ID here for canvas, my canvas. So once we will say write document dot get element by ID, so what it will do, it will get the handle or reference of the HTML page, and then it is going to get the element by which has ID of my canvas. So in this case, the object of canvas will be received by variable C. I repeat, in this by this code, the object of canvas will be received by variable C. Now variable C has object of canvas. We apply second operation, C dot get context 2D. 2D is indicating that we are creating some 2D object or 2D shape. So by this method we get a 2D reference of the canvas, and the variable is context CTX. Now it means that conceptually we can say that we have created a 2D canvas for a drawing with these two line of statements. The third statement is, which is on a 2D canvas, is move to 0.0. So what will happen, that control is going to move at 0.0 location at the top, as my cursor is showing you. And then there is context at line 2, another method line 2 which draws the line 200 100, that is the far end of the line, other end of the line. So line will so for line, now we get two coordinates, one is 0 0, other one is 200 by 100. And after setting 2 points of the line, we will give third command, that is stroke. Once we will, this stroke command or statement will be executed, this line will be drawn, and here script ends and body ends and HTML code ends. Excuse me. Any question on this slide? Is it okay? Yes sir. Okay. How many students have joined? Okay. So I am not alone. Okay. Next, an example of drawing text on a canvas.
And again, the top three statements are drawing the canvas. These three statements are drawing the canvas, and then our script starts. And within script, we are getting the element by ID, again the same canvas because we have to use this canvas. And again, we are getting, we are creating, we are converting that canvas into a 2D canvas. So with these two statements, now comes the actual part, that is font. Context.font 30 pixels Arial. So here we are setting some properties for the font, that is its size would be 30 pixels and its font type would be Arial. And then we write actual text with fill text method, and we write hello world, and 1050 is the starting position of the text. किस point से इस text ने शुरू होना है, that is starting point for writing the text, and our statements. So since we are doing fill text, so you can see that this text is a bit filled. Every letter is bold and filled. So it is because here we are seeing context or fill text. So a fill text will be written at specified location. So this is an example of drawing text. And similarly, um, linear gradient and image drawing is also supported, and these you can see from this link about the syntax of these two, linear gradient and image. So so your study self study would be, you need to see the code for drawing the circle, then stroking a text, and draw circle gradient. तो ये तीन टेक्स्ट आपने इसकी सेल्फ स्टडी करनी है, बट you have got a basic idea how we draw various elements with canvas. Other is just the understanding of the methods which are used. Second most popular way of drawing, creating some drawings on HTML page is SVG. SVG stands for vector based graphics, and it has for its format is XML. So it is XML based format. So SVG stands for scalable vector graphics. SVG, scalable vector graphics. SVG is used to define vector based graphics for web. आपको कोई आइडिया है कि वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स में और पिक्सल बेस्ड ग्राफिक्स में क्या फर्क होता है? नो सर। एनी आइडिया? किसी को तो आइडिया होगा। सर जो वेक्टर यूज होती है फोटोशॉप वगैरह में, वो वाली? जी जी हाँ, बेसिकली जो वेक्टर बेस्ड ग्राफिक होती है ना, ये आप अगर आप उसका साइज बड़ा भी करें ना, तो वो बीच में ब्लर नहीं होती, क्योंकि वेक्टर्स ड्रॉ हो रहे होते हैं। तो जैसे आप वो साइज बड़ा करते हैं, वो वेक्टर को खिंच के तो वो उसको कवर कर लेती है। जैसे मैंने इमोजी की एग्जांपल दी थी आपको नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में, तो वो भी जो उसकी जो ड्राइंग ड्रॉ होती है, कैरेक्टर सेट जब हम डालते हैं तो वो वेक्टर बेस उसकी ड्रॉ होती है, इसलिए उसको साइज जितना भी बड़ा करें इमोजी बिल्कुल आपको कोई उसकी पिक्सल्स ब्रेक हुए हुए ऐसा नज़र नहीं आते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स। तो फोटोशॉप वगैरह में दोनों ऑप्शन होते हैं, हम वेक्टर बेस्ड उसको सेव करना है या हमने पिक्सल बेस्ड सेव करना है, लेकिन वेक्टर बेस्ड का ये एडवांटेज होती है। SVG defines graphics in XML format. तो XML is a separate format, हमने पढ़ा तो नहीं है XML को,
लेकिन XML जैसे मैंने आपको ये बात बताई थी कि XML इज easy to transport data and it's easy to save. लेकिन it is just XML भी characters ही होते हैं like HTML, इसलिए XML को transport करना आसान है. You just send various textual documents here and there, so it's easy to transport. और XML contains the data. तो इसका जैसे हम कहते हैं डेटा कंटेन करता है, तो अगर ग्राफिक्स हमारी XML बेस्ड होगी तो हम इसका मतलब है कि हमारा जो फाइल होगी होगी तो XML बेस्ड, बट इट विल कंटेन द ग्राफिक्स डेटा, will contain complete graphics. Next is that every element and every attribute in SVG file can be animated. तो हमें animations भी supported है इसमें. Then SVG is W3 recommendations. तो recommended ये है W3C से कि आप जो भी graphics बनाते हैं those we should make based on SVG technology. And then SVG integrates with other W3 standards such as DOM and XLS. Again, DOM stands for Document Object Model, और HTML का भी ऑब्जेक्ट DOM होता है. हर जो फाइल होती है वो it has some structure that is called DOM, और XSL is basically again XML based language, but it is used to transform XML documents. I repeat, XSL is used to transform XML documents. अब इनपुट देंगे XML document तो आपको आउटपुट एक और XML document मिलेगा with some sort of transformations. It may be annotations, it may be adding something, deleting something from the input model. Then the advantages of SVG. Advantages of using SVG over other image formats like JPG and GIF are: SVG images can be created and edited with any text editor. क्योंकि XML based ये होता है तो किसी भी text editor में आप images को edit कर सकते हैं. Then SVG images can be searched, indexed, scripted and compressed. Again, very good and useful advantage. Then SVG images are scalable, यानी कि आप उनमें डेटा एनरिच कर लें, डेटा कम कर लें, ये सारी उसमें इंफॉर्मेशन जितनी डालनी है डाल सकते हैं. SVG images can be printed with light, high quality at any resolution. Again, very powerful advantage of SVG image that you can print SVG image at high quality at any resolution. Then SVG images can be zoomable. Then SVG graphics do not lose any quality if they are zoomed or resized. वो मैं आपको पहले बता दिया. SVG is an open standard. Proprietary standard नहीं है Microsoft, Oracle वगैरह किसी का. It's an open standard standardized by W3C, and SVG file is pure XML. So let's start to have a look on some syntax of SVG. So as we saw in the previous canvas-based graphics, that canvas is a container. Again here for SVG graphics, SVG element is a container for SVG graphics, and SVG has several methods for drawing paths, boxes, circles, text and graphic images. So let's see the first example. So first of all, you will see that the whole graphics, there is no script. JavaScript, there is no JavaScript. There is a starting tag for SVG, height and width, create a canvas, again canvas as SVG based drawing area. The drawing area is 100 by 100, and then we are drawing a circle, and then SVG tag ends. If our browser will not support SVG,
then this text will be written. Sorry, your browser does not support inline SVG. And secondly, you can see the syntax for drawing circle. You have to provide the coordinates of the center, that is 50 50, 50 comma 50, that is basically center of the circle. And then you just have to mention the radius of the circle. So with these three kinds of input attributes, the circle will be drawn. Again, the stroke is green, that's why you can see its circle is green. Stroke width is 4, so you can see its width of the boundary is 4, and fill is yellow. So you can see fill is yellow. So it's easier and concise syntax for drawing graphics, as you can see from the example of circle. Any question on this slide? No, sir. Okay, so this is an example of rectangle. Again, it will be contained in SVG tag, and within next SVG tag, we are just providing two parameters: rectangle, width 400 and height 100. Canvas, it is exactly according to the size of SVG. And once we go to the style, we are filling with blue color. Then stroke width is 100, as you can see the boundary, and the stroke color is pure black, that is RPG 000. So this is how we can draw a rectangle. Then there is a concept of creating a gradient of color. You can you can create gradient of color. इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने लगा हूँ. First of all, a linear gradient element is required to be used to define a linear gradient. Secondly, the linear gradient element must be nested within define definition tag. The definition tag is short for definition and contains definition of special elements such as gradients. तो gradient के जो elements हैं उनको आपने एक तो definition tag में आपने enclose करना है. And linear gradient can be defined as horizontal, vertical or angular. अब horizontal के लिए क्या करना है हमने? Horizontal gradient is created when y1 and y2 are equal and x1 and x2 differ. इसी तरह अगर वर्टिकल करना है तो x1 x2 को इक्वल रखना है और y1 और y2 को हमने चेंज करना है. और एंगुलर में हम क्या करेंगे? x1 and x2 differ and y1 and y2 both differ. So it will create an angular gradient. Let's see an example. ओके जी, एग्जाम्पल में आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा है एक एलिप्स, और एलिप्स में आपको वर्टिकल ग्रेडियंट नज़र आ रहा है. इट्स अ वर्टिकल ग्रेडियंट and starting color is yellow and the other end color is orange, or you may call it tomato red. So how are we creating this ellipse? So within an SVG tag, in SVG tag, this whole SVG tag, we are creating definition tag, and within definition tag, we are using linear gradient tag with some attributes. So first attribute is its ID, then x1 percentage, y1 percentage 0%, and x2 and y2.
So here you can see that y1 and y2 are same. So it is a condition for creating a vertical gradient कि y1 और y2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए, x1 और x2 की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए. तो x1 0 कर दिया और यहाँ 100 कर दिया. तो इट मीन्स दैट वी आर गोइंग टू चेंज द ग्रेडियंट along the x axis, whereas along y axis हमारा पूरे एक्सिस पे सेम ही कलर रहेगा. After that, for drawing the colors, we use stop tag. और इसमें हम बताते हैं ऑफसेट, हम कहते हैं ये ऑफसेट 0%, स्टाइल स्टॉप कलर RGB 25550, स्टॉप ओपेसिटी 0. तो बेसिकली ये जो लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड का कलर सेट कर रहे हैं. ये वाला जो येलो है, येलो कलर सेट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड पे. उसके बाद हमने राइट साइड वाला कलर जो फार हैंड का कलर है वो सेट करना है, एंड दैट इज 25500. स्टॉप कैपेसिटी 1. ओपेसिटी, ओपेसिटी से क्या होता है, जो शो करता है कि ट्रांसपेरेंसी होगी या नहीं होगी. तो ओपेसिटी 1 का मतलब है कि जीरो ट्रांसपेरेंसी. ओपेसिटी, आई रिपीट, ओपेसिटी 1 मीन्स जीरो ट्रांसपेरेंसी. और तो लीनियर ग्रेडियंट का हमारा टैग खत्म हो गया, फिर डेफ का टैग, डेफिनेशन का टैग खत्म हुआ. और जब ये हमने सारा ग्रेडियंट डिफाइन कर लिया, नाउ वी आर ड्राइंग एलिप्स. एलिप्स के लिए हमने पैरामीटर दिए, एक्स और वाई पैरामीटर दिए, और तीसरा पैरामीटर दिया हमने इट्स सॉर्ट ऑफ रेडियस. और ये 3 पैरामीटर देंगे तो ये क्या होगा, एलिप्स ड्रॉ हो जाएगा. और अब हमने ये बल्कि 4 पैरामीटर दे रहे हैं. इसके बाद हमने फिल का एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं. फिल URL ग्रेडियंट 1. यहाँ पे आप देखें आईडी क्या है इसकी, डेफिनेशन की ग्रेड 1. यही आईडी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. तो जो ग्रेडियंट हमने यहाँ पे डिफाइन किया, दैट विल बी अप्लाइड ऑन द एलिप्स. If this SVG is not supported by the browser, then only this will be written. Sorry, your browser does not support inline SVG. So for self-study, you have to see the rounded example of rounded rectangle and how can we create a star. ये दो एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं लिंक्स पे, इनको आपने एक्सप्लोर करना है एज अ सेल्फ स्टडी योर होमवर्क. एंड इफ वी जस्ट समराइज the difference between canvas and SVG, you can see we are putting their features side by side. So if we talk about canvas is resolution dependent. इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी रेजोल्यूशन कम होगी तो इसकी इमेज की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी. whereas SVG is resolution independent, तो इसकी रेजोल्यूशन से इमेज क्वालिटी ख़राब नहीं होगी इसको छोटा बड़ा करने से. Secondly, there is no support for event handlers in canvas, whereas it supports the event handlers. Event handler का मतलब है ऐसे क्लिक करके आप कुछ कहीं जा सकते हैं, या डिफरेंट इवेंट्स हो सकते हैं. क्लिक इज वन ऑफ द इवेंट, मल्टीपल इवेंट्स, होवरिंग का इवेंट है. इस किस्म के इवेंट्स कैनवस नहीं हैंडल कर सकता, बट SVG कैन हैंडल. पुअर टेक्स्ट रेंडरिंग कैपेबिलिटी. सो for writing text, canvas is not very effective as compared to SVG. Fourthly, you can save the resulting image as PNG or JPG, but on the other hand, here the advantage is that it is best suited for applications with large rendering area like Google Maps, and it is well suited for graphic intensive systems or games, but SVG is not suitable for game applications. Rather, it may have slow rendering if a complex graphics has to be formed. तो इसकी rendering थोड़ी सी complex हो जाएगी as compared to
canvas. So this ends our one of the sections सर of the lecture. जी सर ये जो है इसमें अभी हमने पढ़ा गेम एप्लीकेशंस के लिए सूटेड नहीं है एसवीजी, ये क्यों है? क्योंकि इसमें वो रेंडरिंग करेगा ना, एक्सएमएल बेस है ना, असल में एक्सएमएल को ड्रॉ करते हैं ब्राउजर, तो एक्सएमएल को ड्रॉ करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। उसने उसको ड्रॉ करके ट्रांसफॉर्म करना है इमेज को, एक्सएमएल से ग्राफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्जन में ऐसे ही जैसे वो कम होता है ना आपका, एक तरह ये समझ लेंगे क्या उसको कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो आपका रन टाइम पे चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, एक तो कंपाइल टाइम होता है ना, एक कंपाइल्ड होता है और दूसरा होता है उसको हम जैसे पाइथन है वो जो इंटरप्रेटर रन टाइम पे आपको रन टाइम पे प्रोसेसिंग करता है, तो इसकी प्रोसेसिंग रन टाइम पे होती है एसवीजी की, तो इसलिए गेम में क्योंकि ग्राफिक कम्प्लेक्स सही होती हैं तो फिर ये इसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है एसवीजी से अगर ड्रॉ करेंगे, तो ये इशू है। ठीक है, ठीक है सर। सर और जो हमारे पास ये इमेजेस वगैरह वाली वेबसाइट्स होती हैं, ये भी सारी जेपैग या पीएनजी फॉर्मेट में हमें इमेज को डाउनलोड करने देती हैं। एसवीजी बेहतर होता है, तो फिर एसवीजी से क्यों नहीं करने देती? एसवीजी भी मिलेगी आपको, ये फॉर्मेट भी मिलेगा आपको, सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, सब फॉर्मेट ठीक मिल है जाते सर। हैं, जिफ मिल जाएगा, पीएनजी मिल जाएगा, जेपीजी मिल जाएगा, सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं। ठीक हो गया जी। सो वी टेक अ 10 minutes break. It's half of the lecture. We'll resume after 4:07 हो गया, so we will resume at around 4:20 4:20 पे हम दोबारा शुरू करेंगे lecture. Have a break.